कांग्रेस ने किया मिलन कार्यक्रम का आयोजन। वर्तमान भाजपा सरकार पर करनी व कथनी में अंतर का लगाया आरोप। আপোনালোকে দেখিছে যে বিজেপি শাসনত আহাৰ পিছত প্ৰতিটো বস্তুত তেওঁলোকে এটাই পৰিৱৰ্তন কৰিছে। সেই পৰিৱৰ্তনটো হ'ল তেওঁলোকে প্ৰতিটো বস্তুত খালি ট্যাক্স লৈছে, ট্যাক্স। कार्बी अंगलांग जिला कांग्रेस ने पश्चिमी कार्बी अंगलांग के द्वार अमला परिषदीय क्षेत्र के अरलांग कुंडू तारालांगसू में एक आम मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस समिति के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेसी नेताओं ने वर्तमान भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र, राज्य व कार्बी अंगलांग स्वायत्त शासी परिषद प्राधिकरण सरकार के नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार का कथनी कुछ और है तथा कथनी कुछ और है। चुनाव में मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली ये सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता को चुस रही है। यही नहीं, ये सरकार विकास का कम टैक्स वसूलने की सरकार बनकर रह गई है। इस कार्यक्रम में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। मनोज पासवान, बैठा लांगसू। সমবেত হৈছে মোৰ আই মাতৃসকল, বন্ধু বান্ধৱ সকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমি সকলোৱে একগোট হৈ এটা মাৰত খাৰা হৈ আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰি আমাৰ ইয়াত যিজন প্ৰাৰ্থী হ'ব, যিজন প্ৰাৰ্থী লিডাৰশ্বিপে দিব, তেওঁকে আমি সকলোকে ভোট দি আমি জয়যুক্ত কৰি আমাৰ ইয়াৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক, ইয়াৰ সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে গতিকে এই ফালৰ পৰা গোটেইটো অংক মিলাই পেলাই আমাৰ আগষ্টিন, আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আগষ্টিন ইংহি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ২৬ত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব। গতিকে তেখেতে এনেই কোৱা নাই, হিচাপত কৈছে। আৰু কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকল যিমান আছোঁ, তাৰ লগতে অনেক কাৰ্বি, বিহাৰীয়ে হওক, বেংগলীয়ে হওক, ইমান আছে। মানে তেওঁলোককো এবাৰ ক'ব এইটো বোলে পিজিআৰ বিজিআৰ বিহাৰীক খেদিব লাগে, আৰু তাতে হয় ভৰ দিব কোনে খেদিব লাগে বুলি APSLC